welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Complaint filed against Ranveer Singh for his nude photoshoot. Rudrani chats with Dhanush and Russo Brothers. Disha Patani almost trips wearing a pastel green ethnic outfit. रणवीर सिंह अपने न्यूड फोटोशूट की वजह से फंसे बड़ी मुश्किल में. रणवीर सिंह के खिलाफ पुलिस में एक कंप्लेंट की गई फाइल. रणवीर सिंह पर लगा चीप पब्लिसिटी बटोरने का एलिगेशन. रणवीर सिंह की कुछ न्यूड पिक्चर्स हाल ही में जब सोशल मीडिया पर सामने आईं, हर कोई हैरान रह गया. जहां रणवीर सिंह की वुमेन फैंस ने रणवीर सिंह के इस न्यूड फोटोशूट को पसंद किया, वहीं कुछ लोगों को लगा रणवीर सिंह का ये एक्ट था चीप पब्लिसिटी के लिए और साथ ही इस न्यूड फोटोशूट पर लगा वल्गैरिटी फैलाने का एलिगेशन. और अब मुंबई बेस्ड एक एनजीओ ने रणवीर सिंह के खिलाफ चेंबूर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई है. इस एनजीओ का कहना है कि रणवीर सिंह की पिक्चर मेल और फीमेल सभी के लिए शर्मिंदगी फील करवाने वाली है. इस कंप्लेंट में कहा गया है, लास्ट वीक वी सॉ मेनी न्यूड फोटोग्राफ्स वर क्लिक्ड इन सच अ मैनर दैट एनी मेल और फीमेल विल फील अशेम्ड अबाउट इट. दीज काइंड्स ऑफ एक्ट्स शुड बी अपोज्ड स्ट्रांगली. साफ है इस एनजीओ का एलिगेशन है कि रणवीर सिंह गलत तरह का प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं और इस तरह हर तरह के एक्टर्स कैमरा के सामने न्यूड पोज करने लगेंगे. वैसे पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं की है और उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है. पुलिस अब इस मामले में इन्वेस्टिगेट करके पता लगाएगी कि इस तरह के फोटोशूट का मकसद क्या था और अगर पुलिस को इस कंप्लेंट में जरा भी सच्चाई लगेगी तो रणवीर सिंह बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं. मूविंग ऑन, इस बड़ी कंट्रोवर्सी के बीच रिपोर्ट आ रही है कि रणवीर सिंह डायरेक्टर ओम राउत के साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं और ये फिल्म लार्जर देन लाइफ हो सकती है. और इस बड़ी डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, Om Raut and Ranveer Singh have been talking about an exciting big-scale theatrical extravaganza that will blow people's minds. The film is yet to get a title, but the conversations are in the advanced stages at the moment. आगे इस सोर्स ने ये भी कहा है कि ये प्रोजेक्ट सबके होश उड़ा सकता है. It's a collaboration that will create noise across the country. जयेश भाई जोरदार के नॉट सो सक्सेसफुल रन एट द बॉक्स ऑफिस के बाद रणवीर सिंह की उम्मीदें अब रोहित शेट्टी की सर्कस और करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से हैं. और अगर ओम राउत के साथ रणवीर सिंह एक लार्जर देन लाइफ फिल्म ऑफिशियली साइन कर लेते हैं तो ये डेफिनेटली रणवीर सिंह के करियर के लिए होगी गुड न्यूज. एथनिक वेयर में गिरते गिरते बची दिशा पाटनी. दिशा पाटनी ने ग्रेसफुली खुद को संभाला. दिशा पाटनी अपनी अपकमिंग फिल्म एक विलन रिटर्न्स को इन दिनों जमकर प्रमोट कर रही हैं. ऐसे में दिशा पाटनी अपनी फिल्म के रीसेंट प्रमोशनल इवेंट पर पहुंची एथनिक वेयर में. यहां दिशा पाटनी नजर आई प्लंजिंग नेकलाइन pastel सलवार सूट में. She completed her look with matching juttis and looked gorgeous. लेकिन वेन्यू में एंटर करते हुए दिशा पाटनी हो गई ऑलमोस्ट ट्रिप, लेकिन उन्होंने ग्रेसफुली खुद को संभाला और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हंसते हुए वेन्यू में एंट्री की. वैसे हाल ही में दिशा पाटनी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि रणबीर कपूर उनके पहले सेलिब्रिटी क्रश थे और उनकी वजह से कई बार उनका एक्सीडेंट भी हुआ था. She said, "When I was in school, I was a huge fan and I almost got into so many accidents because I used to see his poster. In my city, there was a huge poster of his. I think he was endorsing some brand and I used to just stare at it and ride my scooty and I just bumped into so many things while doing that.
आपको बता दें कि फिल्म एक विलन रिटर्न्स में दिशा पाटनी ग्रे कैरेक्टर में नजर आएंगी और उन्होंने बताया कि शी लव्ड प्लेइंग अ ग्रे कैरेक्टर. शी सेड, I feel as an artist there is so much more that I can do with a grey character over a white or a black or whatever. Like a hero. I have grown up watching thrillers and action films all my life. And I feel like all those movies that I had seen when I was younger until now, I felt I could bring something from those and put it into my character and make my own thing out of it. Well, अब देखना ये होगा कि दिशा पाटनी के प्ले किए गए ग्रे कैरेक्टर को ऑडियंस का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. Vanakkam India. It's the Russos. They are going to capture the best version of you. So I really loved it. Just like my fans, I also wanted a little more. A little more? Greedy. Yeah, I saw that. I'm being greedy, but an actor should be greedy, right? And there's so much to score in that character, so much to play around, and I'm sure Chris would have had a blast playing that character. When you're working with someone like Dhanush, he's very inspiring. You know you're dealing with somebody who has an incredible screen presence, and that very much informs how Joe and I think about the shots that we're going to build around the character. Yeah. I think many times before doing something, and it means a lot to me. It's very dear to me, my culture. It's very close to my heart. Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. My guests today are very interesting. See, when you have the best team, you get the best action. And here we have the Russo Brothers and Dhanush himself, so you know you're getting the best of action. Hello, welcome to the show. Thank you. Hi, how are you? I am good. It's so nice to be catching up with all of you. Yeah. My question to the two of you is, I'm sure you watched some of his work, right? I want to know, when you saw that work, did you see like, oh, I have to try getting some of that natural swag into the scene? I mean, if we don't do it, we will not be doing justice to Dhanush. Does that come to your mind? Well, listen, we love to give characters a great entrance. Yeah. It's really important to do that, especially big characters. And, his character is the character that shows up in Best the Gray Man, so, he's going to need an entrance, so you can feel the energy coming. He comes with his own swag. We didn't have to ask him to give it on camera, but we did conceive of that entrance to, have him walking towards the hospital, the knife dropping into his hand. Yeah, Yes. yeah, all of that, right? Yeah. Love it. Anything more to add? I mean, like I said, what do you think about it? Well, also, look, when you're working with someone like Dhanush, he's very inspiring. You know you're dealing with somebody who has an incredible screen presence, and that very much informs how Joe and I think about the shots that we're going to build around the character. Yeah. Okay, now I'm going to ask you very honestly, Dhanush. Tell me 3 of your top 3, according to you, best entrants in films, and let me see if this makes it to your top 3 list. You're honest, so I am sure you're going to be. It could take a while. I mean, I don't know off the top of my head. This is definitely one of the. Okay. So it makes the top 3. Yay! It definitely is one of the best entries, and it's a lot. It's a lot me. Yeah. So, yeah. So I really like this entry. Okay, lovely. And I think you've got like fantastic reactions from the fan as well. So I think everybody's really happy about it. I know it's important. You've been someone who's always made sure that you have been represented in the right way, and I think you have been here. But in the past, sometimes when you have Indian characters, they can get to be a little stereotyped. Was that important for you when you had that discussion? It is absolutely very important, and I think many times before doing something, and it means a lot to me. It's very dear to me, my culture. It's very close to my heart, and I take utmost care to deliver it properly. When they say that it doesn't matter what your screen time is if it's impactful enough, and I think it's one of those parts. I think you came in and you make an impact. So tell me, when you saw your part, what did you actually think of it? I really liked it. I mean, it looked really cool, very stylish, very cool. And of course, it's the Russos. They are going to capture the best version of you. So I really loved it.
Just like my fans, I also wanted a little more. A little more? Yeah, I saw that. I'm being greedy, but an actor should be greedy, right? Sure, absolutely. You know, it looked like a really well choreographed scene. Both one end, you know, you have Ryan, at the other Anna, and I think I loved the way it was done. Tell me a little more. We trained for a while, like we trained about a month and a half for that one set piece action. And every actor worked really hard. Every actor practiced and trained every day. We put in a lot of effort. The stunt choreographers, the makers, the doubles, they went through a lot of pain. I mean, making action films, it's not easy. It's a very tough job. And but when it all comes together, and when you see the audience get excited, especially that Prague sequence, that chase sequence. I was watching it in LA, the premiere. Yeah. You know, here we clap and we are very loud. We express a lot when you watch film, and you know. Yeah. But there in LA, when the Prague sequence got over, the entire theater applauded. You know, the whole theater clapped, and I was like, when it all makes sense when that moment happens to you, right? Yeah, absolutely. Oh. You know, before I have one question for you, of course, I want to quickly ask you this as well. Your character also has this person who has a slight bit of morality. I'm not giving away too much, obviously. Is a slightly moral character. Was that important for you, or are you okay to play characters that are completely like Lloyd? I'm okay to. I would have loved to play Lloyd. You don't love to play Lloyd? I would love to play. There's so much to score in that character, so much to play around. And I'm sure Chris would have had a blast playing that character. And I would, yeah, definitely. It's not that important. Why was it important for you, towards the end of it, that you decided to give him like, you know what? These are not cool people. I mean, even, you know, they say honor among thieves. It seemed like a line like that. Yeah. Why was that important to do? Well, one thing we really loved about the character of Avik Khanna is that he's sort of this unstoppable force within the movie. He gets what he wants from the gray man, and then he chooses to leave the conflict. You know, it's his choice. And it just gives the character a lot of power in the story in a way where you're just almost a little unnerved by it, because you're like, well, where is he going? What's happening? You know, we wanted to be able to, think about this character as something that was like, didn't fall into the same pattern that the other characters in the movie did. And it's very intriguing, and it makes you want to know more about the future of him. Also, we like characters, we like complicated characters, you know. We like good characters that have flaws, and we like bad characters that have virtues, right? So it's nice to see sort of a more complex character. The gray man. It has to be a little grey. Yeah. Dhanush, you know, you've been someone who's obviously played hero, but I want to know, is it difficult when you are a star of this caliber and, you know, your audience expects some kind of a role from you? Do you sometimes feel like you get bound by the love because they're like, you know what, we want you to do more of this, but you as an actor want to do crazy things. How do you balance that dilemma? I mean, I love the unconditional love my fans have towards me. It means the world to me, you know. I work very hard to make them proud. At the same time, it's up to you, it's up to the actor to make your audience like what you're doing. I mean, no matter what the character is, you can still make them enjoy your work. And that's how I approach a character, even if it's a bit difficult character for people to like, you can still make it likable for your audience to watch. So would you like to say Vanakkam India? Vanakkam. Vanakkam India. Vanakkam. Vanakkam. So Vanakkam India. So Vanakkam India. Is that it there? Vanakkam India? Yes. Or that one over there? Yeah. Dhanush, let's all do Vanakkam India, okay? Yes. 1, 2, 3. Vanakkam India. You all are really, really good. Thank you so much. It was absolute pleasure to chat with you all. I really enjoyed this collaboration. Wonderful. So, thank you. Looking forward to so much more. Thank you. Thank you for the interview. Yeah. Thank you so much. Coming up on the show, is Katrina Kaif upset with ex Ranbir Kapoor's cameo in Vicky Kaushal's Govinda Naam Mera? कटरीना कैफ अपने हस्बैंड विकी कौशल से क्यों हुई खफा?
क्या है कटरीना कैफ की नाराजगी के पीछे रणबीर कपूर का कनेक्शन? क्या एक्स रणबीर कपूर और अपने हस्बैंड की दोस्ती से कटरीना कैफ नहीं है खुश? रणबीर कपूर और कटरीना कैफ लगभग 6 साल पहले अलग हो चुके हैं। कटरीना कैफ की विकी कौशल और रणबीर कपूर की आलिया भट्ट से शादी हो चुकी है, लेकिन अब तक रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के बीच बैड वाइब्स की खबर आती रहती है। और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कटरीना कैफ इस बात से खफा है कि उनके एक्स रणबीर कपूर ने उनके हस्बैंड विकी कौशल की फिल्म गोविंदा नाम मेरा में आखिर कैमियो रोल क्यों प्ले किया है। जी हाँ, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कटरीना कैफ को जब पता चला कि रणबीर कपूर उनके हस्बैंड विकी कौशल की फिल्म गोविंदा नाम मेरा में कैमियो रोल प्ले कर रहे हैं, तो कटरीना कैफ ने इस बात को लेकर अपनी नाराजगी साफ जाहिर कर दी। लेकिन कहा जा रहा है कि इसका फर्क फिल्म की स्क्रिप्ट पर नहीं पड़ा है और रणबीर कपूर ने ऑलरेडी इस फिल्म के अपने पार्ट की शूटिंग को पूरा कर लिया है। वैसे इस न्यूज पर अब तक ना तो रणबीर कपूर, ना ही विकी कौशल और ना ही कटरीना कैफ की टीम की तरफ से कोई रिस्पांस आया है। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रणबीर कपूर और विकी कौशल अच्छे दोस्त हैं। तभी तो हाल ही में रिलीज हुई रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा की स्क्रीनिंग पर विकी कौशल नजर आए थे और पैप्स की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने इस फिल्म को थम्स अप दिया था। वैसे फिल्म संजू के दौरान विकी कौशल और रणबीर कपूर का याराना साफ दिखा था और इन दोनों ने जिस तरह सिल्वर स्क्रीन पर दमदार परफॉर्मेंस दी थी, इन दोनों एक्टर्स को खूब वाहवाही मिली थी। ऐसे में गोविंदा नाम मेरा में इन्हें फिर से एक साथ देखने का एक्सपीरियंस फैंस के लिए होगा अमेजिंग। जहां तक रही कटरीना कैफ की नाराजगी की बात, विकी कौशल अपनी वाइफ को मना ही लेंगे। मूविंग ऑन, विकी कौशल और कटरीना कैफ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के गैंग के साथ मालदीव्स गए थे, जहां कटरीना कैफ के बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया। और अब कटरीना कैफ की अच्छी दोस्त मिनी माथुर ने सोशल मीडिया पर इस ट्रिप की कुछ अनसीन यादों को शेयर किया है। एंड वी हैव टू से, इस वीडियो में कटरीना कैफ का पूरा गैंग एंजॉय करता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो में जहां मिनी माथुर मालदीव्स के इस लग्जूरियस आइलैंड रिसोर्ट को एंजॉय करती दिख रही हैं, वहीं बाकी सभी लोग अलग अलग एडवेंचर स्पॉट्स का मजा लेते हुए दिख रहे हैं। वैसे इससे पहले खुद विकी कौशल और कटरीना कैफ ने इस अमेजिंग हॉलिडे की पिक्चर्स और वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीनिंग के दौरान क्या करीना कपूर खान की आंख लग गई थी? करीना कपूर खान की पिक्चर इंटरनेट पर वायरल हो रही है। इसमें वो आमिर खान के साथ नजर आ रही हैं। पिक्चर में जहां आमिर खान इमोशनल लग रहे हैं, वहीं करीना कपूर खान फॉल्स अस्लीप। ये स्नैप फिल्म के BTS वीडियो की है। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स करीना कपूर खान को इसके लिए ट्रोल कर रहे हैं। बवाल की टीम के साथ वरुण धवन गेम्स एंजॉय करते दिखे। दरअसल वरुण धवन और जानवी कपूर इन दिनों पोलैंड के वॉर्सॉ में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में जैसे ही वरुण धवन को शूटिंग से थोड़ा ब्रेक मिला, उन्होंने टीम के साथ की फुल ऑन मस्ती। ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी डॉटर आराध्या बच्चन की एक न्यू पिक्चर सोशल मीडिया पर हुई वायरल। इस सेल्फी में मॉमी एंड डॉटर डुओ कैन बी सीन पोजिंग विद डेंटिस्ट्स। Both Aishwarya Rai Bachchan and Aradhya Bachchan smiled warmly at the camera as they clicked the happy selfie. इस पिक्चर में जहां ऐश्वर्या राय बच्चन ओपन हेयर एंड मिनिमल मेकअप में फ्लॉलेस लग रही हैं, वहीं आराध्या बच्चन भी अपने कैजुअल अटायर में अडोरेबल दिख रही हैं। क्या आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के डिले होने से हैं खुश? रिसेंटली आमिर खान ने हैदराबाद में एक इवेंट के दौरान रिवील किया कि उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर KGF चैप्टर 2 के साथ क्लैश होने वाली थी, लेकिन फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क के डिले होने की वजह से फिल्म की रिलीज भी टल गई। आमिर खान said, I remember when KGF 2 was about to release, there was a lot of excitement among the Hindi audience, amongst my own friends. Lal Singh Chadha was supposed to release on that day, but fortunately for us, Red Chillies was taking a little time on the VFX, so we got saved. Otherwise, we would have come with KGF 2. कार्तिक आर्यन की फ्रेडी अपनी OTT रिलीज को लेकर मुसीबत में फंस गई है। सोर्सेज के मुताबिक इस फिल्म को मेकर्स डायरेक्टली OTT प्लेटफॉर्म पर करना चाहते थे रिलीज, लेकिन इसके लिए फिल्म को कोई बायर नहीं मिल रहा है। Apparently, the makers have approached multiple OTT players, but none seem interested in the movie, owing to its subject matter and treatment. हालांकि कुछ लोग कार्तिक आर्यन के नाम पर बेट लगाने के लिए तैयार हैं। बता दें, इस फिल्म में कार्तिक आर्यन लीड रोल में हैं और OTT रिलीज में आ रही प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है मेकर्स अब इस फिल्म को सीधा थिएटर्स में ही कर दें रिलीज।
रणबीर कपूर के बाद रिपोर्टेडली अब दीपिका पादुकोण ने भी करण जौहर के कंट्रोवर्शियल चैट शो पर आने से किया इनकार। एक पोर्टल में आई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दीपिका पादुकोण इस समय किसी भी कंट्रोवर्सी में खुद को नहीं डालना चाहती हैं और इसलिए उन्होंने ऑनगोइंग शो में अपीयर होने के ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। वैसे her decision may have come considering the track record of Coffee with Karan as well as her own experiences on the show in the past. एक सोर्स ने दीपिका पादुकोण को कोट करते हुए कहा, "DP just didn't say a yes."